विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? वार हो सकता है, एक्सटर्नल अटैक हो सकता है, आर्म रिबेलियन हो सकता है, लेकिन थ्रेट टू इंटरनल पीस नहीं हो सकता है। As per Article 352 of Indian Constitution, national emergency can be declared on three specific ground. कौन कौन सा? War, an official conflict between two countries, external aggression, an attack on the country by an external force, armed rebellion, a violent internal conflict aiming to overthrow the government, replacing the earlier term internal disturbance through 44th Amendment Act 1978. Threat to internal peace is not a valid ground for declaring a national emergency. The term internal disturbance was previously used but was considered too rogue, hence replaced with armed rebellion to prevent misuse. War, formal state of conflict between nations. External attack, any hostile act by foreign country even without a formal declaration of war. The change from internal disturbance to armed rebellion after 1975 emergency reflect the legislative intent to prevent the arbitrary use of emergency powers. The president can declare national emergency on the basis of आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एक्सरिएशन, हाँ वार, तीनों पे आर्टिकल 352। देखिए वार, अगर वार हो जा रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, हॉस्टाइल एक्ट फ्रॉम फॉरेन एंटिटी, आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल वायलेंट अपराइजिंग हो रहा है, तो सिंस ऑल थ्री सिचुएशंस आर ग्राउंड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी। ठीक, जैसे 1962 में इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर, 1971 में लेट द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। The 1975 emergency declared on grounds of internal disturbances highlighted the need for clarity and led the 44th amendment. ठीक, under which of the following circumstances can the president declare emergency? एक्सटर्नल अग्रेशन पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स नहीं, आर्टिकल 356 लागू होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं। अच्छा ये हो ठीक 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 ठीक, तो इंटरनल ये आर्टिकल 356, हाँ सही है सही है सही है सही है सही है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। मैं सब समझा नेशनल इमरजेंसी, देखिए ये ध्यान देना है कि ये नहीं वो करना है। ठीक, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, वार एंड आर्म्ड रिबेलियन। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। इंटरनल डिस्टर्बेंस is not a ground for declaring national emergency. Post the 44th Amendment Act 1978, it was replaced by armed rebellion. According to Article 352 of the Constitution, the national emergency can be declared in the among the following circumstances: the failure of constitutional machinery, national emergency की बात हो रही है, नहीं इन्वेजन पे हो सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे नहीं हो सकता, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड, हाँ ये इन्वेजन पे भी हो सकता है, ये सबसे उपयुक्त है। आर्टिकल 352 अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इफ वार, फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर कंट्री, एक्सटर्नल एग्रेशन, एनी फॉर्म ऑफ अटैक फ्रॉम फॉरेन नेशन, आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल वायलेंट अपस्प्रिंग, रिप्लेसमेंट, इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इस पर इमरजेंसी लग सकती है। Fundamental insight: 44th Amendment Act 1978 introduced safeguards by making it mandatory for the President to act on written advice of the Cabinet, replacing internal disturbance with armed rebellion to avoid ambiguity. Under Article 352 of the Constitution of India, an emergency can be declared if security of any part of India is threatened by वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये तीनों बेसिस पे। ठीक,
इंटरनल डिस्टर्बेंस 1978 के बाद कोई वो नहीं रह गया। ठीक। What is correct about external emergencies as per Article 352? It is proclaimed by President. सही है। It should be approved by Parliament within 2 months. नहीं, 30 days. It should be approved by Parliament within 1 month. हाँ। It should be approved by Parliament by simple majority. सिंपल मेजोरिटी से नहीं, सिंपल मेजोरिटी से तो वो, अरे वो अपना मणिपुर का जो मामला चल रहा है भाई, 356. It should be approved by Parliament by 2/3 majority. हाँ. It can be revoked by simple majority of Parliament. हाँ, रिवोक करना है तो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है. It can be revoked by 2/3 majority of Parliament. नहीं. It can be approved in joint session of Parliament. नहीं, अलग अलग, मतलब दोनों अलग अलग. ठीक. तो क्या हो सकता है? प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 month, अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3 और रिवोक्ड बाय सिंपल मेजोरिटी. ठीक. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिड्यूस द पीरियड फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर 2 months to 1 month. Emergency declaration and approval process have been critical topics post 1975 emergency. Which one of the following is the time limit for ratification of emergency period by Parliament? 1 month. Article 352 of Indian Constitution provides national emergency proclamation must be approved by both houses of Parliament within 1 month from the date of its issuance. Initially, period was 2 months, but the 44th Constitutional Amendment Act 1978 reduced it to 1 month to avoid arbitrary extension. If not provided within the stipulated time, emergency proclamation ceases to operate. If not approved within the stipulated time, emergency proclamation ceases to operate. अगर मतलब उस की मतलब 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. 3 months refer to ordinance approval by Parliament not related to emergency. 6 months applies to state emergency. Article 356 not a national emergency. Post approval the emergency continues for 6 months and can be extended indefinitely with re-approved every 6 months by a special majority of Parliament. A proclamation of emergency must be placed before the Parliament for its approval within 1 month. Within 1 month. As per Article 352, President must place the proclamation of emergency before both houses of Parliament within 1 month for its issuance. This ensures parliamentary oversight and check the executive's power to unilaterally extend emergencies. The 44th Amendment Act 1978 made it mandatory to obtain written advice from Cabinet before the President can issue the proclamation. ठीक. Written advice before the President can. The provisions regarding the division of taxes between union and states division can be suspended during financial emergency. नहीं, can be suspended during national emergency. Division of taxes जो national emergency के दौरान suspend किया जा सकता है. During national emergency, as per Article 354, the President can modify the distribution of revenues between center and states. सेंटर और स्टेट्स के बीच क्या किया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी के दौरान. ये कंफ्यूज कर देगा. द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट तो कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज. आर्टिकल 354 के दौरान बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. दिस इंक्लूड आर्टिकल 268 to 281 which deal with division of taxes. Such modification must be approved by Parliament.
ये सब अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट के दौरान। फाइनेंशियल इमरजेंसी डज नॉट डायरेक्टली सस्पेंड द डिवीजन बट अलाउज द सेंटर टू डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रोपरिएट। ये डायरेक्ट सस्पेंड नहीं करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन ये डायरेक्ट करता है, मतलब निर्देशन करता है। कांट बी सस्पेंडेड, नहीं। नेशनल इमरजेंसीज अराउज मॉडिफिकेशन। Consent of state not required during national emergency. The power to modify financial arrangements reflect the unitary tilt of the constitution during emergency, emphasizing central authority over state finance. ठीक है। Under which of the following articles can the President of India suspend the enforcement of fundamental rights article except Article 2, Article 20 और 21? तो Article 359, 358 क्या करता है? आर्टिकल 19 को यूज करता है, जबकि 359 क्या करता है? ये 20 और 21 को छोड़ के सबको सस्पेंड कर देता है। और ये उन 20 और 21 को छोड़ के और किसी फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको अधिकार नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप कोर्ट जा सकें। ठीक। 359 authorizes President to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right during national emergency except Article 20 or 21. This suspension does not mean cancellation of rights but merely suspension of their enforcement. वो cancellation नहीं मानता, बस suspension, मतलब उस दौरान जो है बस वो suspend रहेगा। अभी आर्टिकल 20 और 21 है क्या, देख लिया जाए एक बार। आर्टिकल 358 डील्स, आर्टिकल 20 और 21 आर्टिकल 20 क्या करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कोई ऑफेंस है उस पर जो है कन्विक्शन को लेकर है। मतलब दिस आर्टिकल प्रोवाइड सेफगार्ड टू पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स इंश्योरिंग ए फेयर लीगल प्रोसेस रहे। और 3 क्लॉज हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जो दिस प्रोहिबिट द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ दैट वुड पनिश एक्शन दैट वेर नॉट कंसिडर्ड ऑफेंस एट दैट टाइम, मतलब कि उस समय अगर ऑफेंस नहीं थे तो जब ये अपराध किया गया तो उसके लिए सज़ा नहीं मिल सकती। नो डबल जीओपेड्री, मतलब एक ही के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट दमसेल्फ, वो खुद के लिए या खिलाफ गवाही नहीं दे सकता आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग। और ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पे लागू होता है। इट एम्स टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक। Article 20 focuses on protecting individuals during criminal proceedings, ensuring fairness in conviction and punishment. Article 21 guarantees the fundamental rights of life and personal liberty against arbitrary state action, with the Supreme Court continuously expanding its scope to include various aspects of dignified human existence. ठीक। Article 358 deals with the suspension of Article 19 during emergency from war or external aggression or armed rebellion. Article 13 defines laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. Article 356 pertains to President's rule, not suspended of rights. Fundamental rights under Article 20, protection in respect to conviction for offences, and Article 21, right to life and personal liberty, protection in respect for conviction for offences are non-suspendable even during emergencies. The 44th Amendment Act 1978 reinforced the non-suspension of Article 20 and 21. The President of India has the power to suspend fundamental rights. लेकिन फंडामेंटल राइट स्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21A ये नहीं वो कर सकते हैं। ठीक। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ मोस्ट फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 और 21 एज पर आर्टिकल 359। 358 आर्टिकल 19 अपने आप 358 के तहत कैंसिल हो जाता है।
ठीक। 44th अमेंडमेंट मेड आर्टिकल 19 नॉन सस्पेंडेबल ड्यूरिंग आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन जो इंटरनल रिबेलियन है उस दौरान आर्टिकल 19 नहीं सस्पेंड हो सकता। वो एक्सटर्नल रिबेलियन मतलब एक्सटर्नल वो मतलब बाहर से आक्रमण हो रहा है या कोई युद्ध चल रहा है, उसी समय आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है। लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन देश के इंटरनल में वो है तब आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता। ठीक है। आर्टिकल 21 कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन फॉल्स अंडर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट बट इज नॉट सेपरेटली सस्पेंडेड। इट इज नॉट सेपरेटली आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट ड्यूरिंग आर्म्ड रिबेलियन। Supreme Court in ADM Jabalpur case 1976 held that even the right to life, Article 21, would be suspended during emergency, but this was later criticized. The 44th Amendment Act addressed this by making Article 21, 20 and 21 absolute. मतलब ये नहीं वो किया जा सकता। अब देखते हैं which one of the following pair of the article relating to fundamental right can't be suspended during the enforcement of emergency under Article 359 of the Indian Constitution। तो आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 359 empowers president to suspend the right to move to court for the enforcement of fundamental right during national emergency। However, the 44th Amendment Act 1978 made it clear that Article 20 protection in respect of conviction for offences and 21 right to life and personal liberty can't be suspended even during an emergency. This safeguard was introduced after the misuse of emergency powers during 1975 emergency, ensuring that basic human rights remain intact. Article 1415 equality before law and prohibition of discrimination can be suspended. Article 1617 related to equality of opportunity in public employment and abolition of untouchability can be suspended. Article 2425 related to prohibition of child labor and freedom of religion can be suspended. The Supreme Court stands in the ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla 1976 case, where it held that even the right to life could be suspended, was later criticized. This led the constitutional reform protecting Article 20 and 21. Which of the following article can't be suspended during national emergency? 20 or 21? Article 20 ensures protection against double jeopardy and self-incrimination. 21 ensures right to life and personal liberty. Both these rights remain enforceable even during national emergency as guaranteed by 44th Amendment Act 1978. Article 19 can be suspended during national emergency declared on grounds of war or external aggression, Article 358, but not during armed rebellion. आर्म्ड रिबेलियन के दौरान नहीं सस्पेंड किया जा सकता। ठीक। सिर्फ मतलब जो इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन है सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान ही, आर्टिकल 358 के तहत। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ पीपल कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी लास्ट बट ओनली बाय 1 year एट ए टाइम। सिर्फ एक मतलब साल में एक बार ही मतलब वो किया जा सकता है, बट ओनली बाय 1 year एट ए टाइम, एक साल के लिए ही एक बार में। एज पर आर्टिकल 83(2) द टर्म ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हाउएवर इट कांट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड। मतलब इमरजेंसी अगर लग गई है तो 6 महीने मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर अगर उसको वो करना है तो फिर पास करना पड़ेगा फिर ताकि आगे बढ़ सके। दिस प्रोविजन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग ए क्राइसिस वाइल स्टिल मेंटेनिंग ए डेमोक्रेटिक चेक। द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय पार्लियामेंट।
Under Article 172(1), during national emergency, the term of state legislature assembly can be extended by parliament by 1 year at a time, similar to Lok Sabha. The extension can't be exceed 6 months after emergency ceases. This provision aligns with unitary character of Indian polity during emergencies. On which of the following dates did a President of India declare that grave emergency existed where the security of India was threatened by internal disturbance? इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, ठीक। तो 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को इंटरनल थ्रेटेंड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस. On 25 June 1975, President of India, on the advice of Prime Minister Indira Gandhi, declared a national emergency under Article 352 on grounds of internal disturbance. This 21-month period, 1975 to 77, witnessed severe curtailment of civil liberties, censorship, and arbitrary arrests. The 44th Amendment Act 1978 subsequently replaced internal disturbance with armed rebellion to prevent misuse. 44th Amendment Act 1978 replaced internal disturbance with armed rebellion to prevent misuse. आर्म्ड रिबेलियन में आर्टिकल 19 को नहीं सस्पेंड किया जा सकता, आर्टिकल 358 के तहत, ठीक। 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ के सब कुछ सस्पेंड किया जा सकता है. वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन में आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन के दौरान ये नहीं सस्पेंड हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ बेसिकली फेडरल इन नेचर. हाँ. Article 352 has provisions to deal with failure of constitutional machinery in state. 352 नहीं है, 356 है, ठीक. Constitution of India predominantly federal with a unitary bias, incorporating features of both federalism and unitarism. Article 352 deals with declaration of national emergency, not the failure of constitutional machinery in state. ये 356 के दौरान कवर होता है. SR Bommai case 1994 reinforced that federalism is a basic structure of constitution. Emergency provision showcases the unitary tilt by giving center immense power during crisis. The 44th Amendment restricted the misuse of Article 352 by ensuring that the President acts on a written advice of the Cabinet. Mainly on whose advice is the President's rule imposed in the state? किसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है? गवर्नर के. As per Article 356 the Indian Constitution, the President rule is imposed when President is satisfied that the state government can't be carried on as per the Constitution. This usually happens on the report of the Governor, although the President can act without a report if circumstances so demand. The Governor, being the constitutional head of the state, assesses the situation and sends the report to the President, recommending the imposition of President's rule. Chief Minister is not involved in recommending President's rule. Legislative power, Assembly may be dissolved. SR Bommai case held that President decision under Article 356 is subject to judicial review, ensuring no arbitrary imposition. Under which article of Indian Constitution can President rule be imposed in a state? तो आर्टिकल 356. मतलब प्रेसिडेंट खुद भी अगर सिचुएशन गड़बड़ हो तो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं उसके आधार पे. Failure of constitutional machinery. Governor's report typically forms the basis of invoking Article 356, but the President can also act on his own discretion. Once imposed, the state legislature is either dissolved or suspended and the President assumes executive authority. Article 370 deals with special status of Jammu and Kashmir. 368 Amendment of the Constitution. 352 Declaration of National Emergency.
Sarkaria Commission 1988 recommended the Article 356 should be used sparingly as it disturbs federalism. Which of the following states there is no provision for imposition of governor's rule? In which of the following states there is no provision for imposition of governor's rules? अभी तो सब में है. Earlier, Jammu and Kashmir had a unique provision of governor's rule under Section 92 of Jammu and Kashmir Constitution for 6 months, after which President's rule could be imposed. However, abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir a union territory and governor's rule was abolished. In other states, Manipur, Mizoram and Meghalaya, President rule is imposed directly under Article 356. Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 transferred the constitutional status of Jammu and Kashmir, abolishing its special provisions. Question 26. If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect to particular state, then the assembly of the state is automatically dissolved. डिसॉल्व नहीं होती है, वो सस्पेंड होती. द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. बिल्कुल सही है. आर्टिकल 19 सस्पेंडेड इन दैट स्टेट नहीं, 56 के दौरान नहीं. प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग, पार्लियामेंट बनाता है. ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 द लेजिस्लेटिव असेंबली में बी आइदर डिजॉल्व और केप्ट अंडर सस्पेंशन. डिजॉल्व भी की जा सकती है और सस्पेंशन में भी रखा जा सकता है, जैसे मणिपुर में अभी हुआ है. द पार्लियामेंट assumes legislative powers and may delegate the authority to make laws to the president or any other authority specified by him. The parliament assumes legislative power. पार्लियामेंट क्या assume करता है? legislative power और may delegate the authority to make laws to the president or any other authority specified by him. ठीक. The executive function of the state are taken over by president, administered through governor. executive order president लेंगे और execute कौन करेगा? वहाँ governor करेगा. Automatically dissolve, no, not necessarily. It can be suspended as well. या तो dissolve किया जा सकता है या तो suspend किया जा सकता है. Article 19 suspension applicable only for national emergency. Article 352 के तहत. President making laws, only parliament can delegate such power. Which of the following are not necessarily the consequence of the proclamation of president rule in any state? Dissolution of state legislative assembly, हाँ. Dissolution of local bodies, हाँ. Removal of council of minister in the state, नहीं. Dissolution of legislative assembly may be dissolved or kept under suspension, but dissolution is not automatic. Dissolution of local bodies, local self-government institutions remain unaffected during president rule. Removal of council of minister, it is a direct consequence as governor takes over. Article 356 empowers president to assume executive authority while dissolving or suspending state legislature. Local governance structure, panchayat and municipalities continue unaffected. Municipalities continue unaffected. Dissolution is not automatic. Dissolution of local body, local self-government institutions remain unaffected during president rule. Removal of council of ministers, it is direct consequences. Governor takes over, as governor takes over. Okay.
अब आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल इन नेचर, सही है। आर्टिकल 352 हैज प्रोविजन टू डील विद फेलियर ऑफ 356, 352 नहीं, ठीक। Indian Constitution is fundamentally federal and unitary basis during emergency। 352 जो है वो deals with national emergency, not a failure of state machinery, indeed by Article 356। Consider the following statement regarding Article 356 of the Constitution। Failure of constitutional machinery in state is an objective reality, सही है। A proclamation under this article can be reviewed by Supreme Court, सही है। Along with this proclamation, state legislature can be dissolved और suspend, दोनों किया जा सकता है, सिर्फ dissolve नहीं किया जा सकता है, ठीक। This proclamation has to be approved by each house of parliament within 2 months, सही है, 2 महीने के अंदर। The failure of constitutional machinery is subject to decision made by president based on governor's report। subjective decision है। SR Bommai case clarified that failure should not be mere subjective perception but the real and tangible connection। ये ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव रहना चाहिए। Supreme Court can review the proclamation under Article 356 was held in SR Bommai case, ensuring judicial scrutiny over the President's decision। Legislative Assembly can be either dissolved or suspended during President's rule। Immediate dissolution before parliamentary approval is unconstitutional। देखिए, legislature assembly can either dissolved or suspended during president's rule। Proclamation of Article 3। The president's rule can be imposed for a maximum period of 3 years। 6 महीने पे अप्रूव करवाना पड़ेगा। President's rule could be extended indefinitely। However, 44th Amendment Act 1978 restricted it for maximum 3 years। Imposed for 6 months initially, can be extended 6 months with parliamentary approval। Beyond 1 year extension is not allowed only if national emergency is in force इन द स्टेट या इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करता है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं। तो अगर ये वो हो जाता है तो क्या 1 साल से ऊपर मतलब वो हो जाएगा 3 साल के अंदर, लेकिन ये सब करवाना होगा। नंबर ऑफ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड, अच्छा देखा जाए मणिपुर में 10 बार, अब ये 11वां बार हो गया समझिए। उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आर्टिकल 356।
As under Article 356 of Indian Government of India, President's rule was imposed for the first time in पेप्सू. कहाँ पेप्सू कहाँ पंजाब सॉरी पटियाला एंड वेस्ट ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन. Punjab and East India State Union was the first to witness President's rule in 1951. This was imposed to be breakdown of law and order, failure of constitutional machinery. It separate precedent for invoking Article 356 in newly formed states or those facing administrative difficulties. Consider the following statement in respect to financial emergencies under Article 360. A proclamation shall cease to operate at expiration of 2 months unless approved by Parliament. सही है. The President can direct the reduction of salaries or any class of person but not judges of Supreme. इनका भी कर सकते हैं. नेशनल इमरजेंसी में ध्यान रहे राज्यों और सेंटर के बीच जो टैक्सेस हैं उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है. Article 360 specifies the financial emergency proclamation must be approved within 2 months by both houses of Parliament. The President can direct reduction of salaries and allowances of all government officials including judges to Supreme Court and High Court. ठीक है. Which of the following is or consequences of invoking Article 360 declaration of financial emergency? The President may order the state to reduce the salary and allowances of all in. हाँ बिल्कुल सही है. Money bills or either or other financial bills passed by the state legislature are not required to be reserved for consideration of the President. नहीं भाई क्यों नहीं? President नहीं देंगे तो कौन देगा? The President can issue direction for re-education of salary and allowances of all individuals, including judges of Supreme Court and High Court. सबसे पहले पेप्सू में लगा था 1951 में. Article 360 empower President to declare financial emergency, financial stability or credit of India or any part of territory is threatened. President can order state to reduce salaries and allowances of government employees, including those serving under state government. It aims to financial bill passed by the state legislature during financial emergency must be reserved for President consideration. This gives center financial control over state during emergency. मतलब अगर पास कर दिया गया है फाइनेंशियल बिल तो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा. President can direct the reduction of salaries and allowances of all union employees, including judges of Supreme Court and High Court. This emphasizes centralization of financial control during emergency. As discussed, financial bill surpassed by state legislature are reserved to president's consideration during financial emergency. Financial emergency में क्या होता है? घर का जो मुखिया है, ठीक, अरे यार क्या क्या बोल रहा हूँ मैं. Financial emergency has never been declared in India. The provision remains controversial due to potential undermine federal. Which of the following article of Indian Constitution has not so far been used? Article 360 financial. देखिए 360 with declaration of financial emergency, 352 national emergency, 356 president rule. ठीक. Article 60 deal with the OP
oath of office. How many times has financial emergency been declared in India? हाउ मेनी मतलब फाइनेंशियल बार कि एक बार भी नहीं हुआ। नेशनल इमरजेंसी 3 बार, जब हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक। डिस्पाइट इकोनॉमिक चैलेंजेस, अरे यार यहाँ कुछ था, देखिए 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वेयर सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस, बस फाइनेंशियल इमरजेंसी वाज नॉट डिक्लेयर्ड ड्यू टू गवर्नमेंट एंड किसान सैलरी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। Despite economic challenges like the 1991 crisis, no financial emergency has been declared under Article 360. The 1991 economic liberalization and reforms initiated under Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh helped avert the crisis without invoking Article 360. Even during 2008 global financial crisis, Indian economy managed to withstand pressure without invoking a financial emergency. ठीक। The emergency a precedent is fraud with constitution, KM नंबियार ने कहा है ये फ्रॉड। KM मुंशी ये फ्रीडम फाइटर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। BN राव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र थे। HN कुंजरू ये भी वो थे, मेंबर थे। सरकारिया कमीशन 1988 recommended Article 356 be used sparingly and only at last resort to prevent political misuse। ठीक, तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय, अब अगले मिलेंगे।